Hello everyone and welcome to new video of editorial part from the Hindu newspaper. I hope you will enjoy this video and today my topic is and the speculation release the AI 171 crash reports. On June 12, 2025, 241 passengers on board Air India AI 171 perished perished in a ferry crash just after takeoff at Ahmedabad, Gujarat. Where was one survivor passenger, 19% on the ground lost their lives, making in the first crash the Boeing 787. Dreamliner since the introduction into commercial aviation, there are over 171 Dreamliners flying with various airlines, operating an average of 12 hours a day. Since the crash, Since the crash, Dreamliner have flown more than 2 million hours without a single engine failure during takeoff in the history of airline. Operators, there have been very rare instances of dual engine failure on takeoff. The accident involving a UPS MD-11 on November 4, 2025 is one which was due to engine separation. After this crash, the U.S. National Transportation Safety Board (NTSB) released relevant transformation with the daily briefings, something that never happened in India. Ever since the crash, the electronics media and social media YouTubers have been separating far-fetched theories to create an atmosphere of fear and also questions the safety standard of the Boeing 787. What is being separate is a diversion from the truth and the Ministry of Civil Aviation. Government of India has played into their hand by dealing the release of final investigation report, the promise of these being transportation report as soon as possible, which the aviation minister announced on on the day after the crash, appears to be another statement which has been swept under the carpet as is the norm for all the aviation accident reports in India. Here is the chronology. The crash happened on the afternoon of June 12, 2025. According to the ANI reports, one of the flight recorders was recovered on June 13 from the rooftop of the building where the plane crashed. The second flights recorder was recovered from the debris on June 16. The Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) lab in Delhi downloaded and accessed the data by June 25. The AAIB's preliminary report was released on July 12, 25, but this report was sketchy and only created more questions than it answered. Treat perception a mysterious order. What has not drawn the attention of many is the Ministry of Home Affairs (MHA) order based on the threat perception identified by intelligence agency in providing the chief of the AAIB with X category commando protection on a 24 into 7 basis. The writers has been following air accident investigations of the US National Transportation Safety Board and the Air Accident Investigation Branch. Kingdom since 1973 and has never come across an accident investigator requiring commando protection. This order has was effective from June 16, just 3 days after the first flight recorder was recovered. It appeared the it appeared the MHA and MOCA were aware of facts which are not being revealed to the public. The weird theories being floated around and the wild speculation could have been avoided had the aviation ministry been transparent with the crash finding. All that required was a straightforward release of the cockpit voice recorders (CVR)
Readouts of the AI-171 from the commencement of takeoff roll on the time crash when the recording stopped, a mere on minutes and 40 seconds, a cryptic sentence in the preliminary accident reports. Why did not? Why do you do that? I did not do that. Of a conservation between the pilot only added to the all the wild theories. What the data would show. From the preliminary report, it was established that the co-pilot was the pilot flying and the captain was the pilot monitoring, doing co-pilot duties. Air India procedure mandates that the captain handle the thrust levers until the takeoff decision speed is attained. The co-pilot handle the control at the speeds call auto call. The captain will remove his hands from the thrust lever based on the preliminary report. There should have been the following calls recorders on the CVR at the rotation speed of 155 kts. In the report, the call should have been rotated. The report mentioned the lift off was 8 8:39. There should have been a positive rate call. When the altimeter saw an increase in height, this call will be by the captain who was the pilot monitoring. The preliminary report follows up with the statement that the number one fuel control switch, number two fuel control switch, transitional to cut off in the 2 second, one after one after the other. This suit of the fuel supply to the engine, the fuel set of valves will close and the engine will be stopped to a fuel supply. A cardinal rule is in flying, that is the event of a major emergency, it is a captain who should take over the control from the co-pilot, with the co-pilot reverting to pilot monitoring duties and carrying out the normal checklist that the captain would call out. In the crash of AI-171, the immediate call of the captain at 8 8:45:44 when the two engines shut down should have been my control, and the immediate response of the co-pilot would have been your control. Where these call recorded on the CVR, the AAIB has an experienced Boeing 787 examiner pilot in its team who would have identified these had the mandatory call out and procedure been followed. If they were the assumption that the engine shut down due to an electric power failure or software failure, which are the theory and speculation on social media, can be considered to be a factor in this accident. The Boeing 877's fuel control switches cannot move due to a software or electric power glitch. They are sparing loaded switch that have to be physically lifted off the run gate, move aft the dropped into the cutoff gate. The moment of a run to restart the engines has to follow the same procedure, which is to lift the switch of the cutoff gate, move forward and drop into the run gate. The digital flight data recorder DFDR, as well as the area mic of the CVR, which will record all the ambient sound in the cockpit, will clearly record this. The Boeing 787 examiner would be aware of this, would have listened to the CVR and would have gone through the DFDR readout. The DFDR would also record every control column movement and control deflection. It can be easily identified who was handling the controls during the takeoff and the segment after the engine failures. What readers so know the is the system that works and the what will not work in the cockpit instrument presentation. While the limited power supply from the battery and the ram ram air turbine rat limit the supply only to essential items such as the captain's instrument panel and engine fire protection. To name a few, as an example, the instrument panel in front of the co- co-pilot
goes blank. This is one of the major reasons why the captain must take over the control immediately, as the co-pilot will not have anything available in the front of him. If the CVR did not indicate the positive takeover of controls, the captain, the fact the facts become very evident is this reason why the Ministry of Home Affairs Intelligence considered there was a threat perception to AAIB chief the damage being caused. It does not take more than 100 days to identify the facts and release transparent report. The credibility of Indian aviation is already suspect by the whitewashing and accident report. It will only add to perception. The NTSP, the AAIB, UK, and Boeing are aware of the DFDR and CVR read out. The US Federal Aviation Administration and aviation regulators in the countries where Boeing 787s are flown have all cleared the aircraft. The MOCA would do change the impression that there was a electric software issues that caused the accident and release the investigation reports immediately. The longer the ministry delays, the greater and danger of pilot being stressed and preoccupied with their mind anticipating this danger instead of being 100% in the cockpit. So I have completed this editorial part, so we have to move on today vocabulary part from all the editorial part of the Hindu newspaper. So let's go. We can see first vocabulary. This is antonym and synonym. First is complacent. Complacent means संतोषी और आत्मसंतोषी इन हिंदी, मतलब आपको कोई काम करने से या कुछ मिलने से आपका माइंड मतलब शांत हो जाए या संतुष्ट हो जाए, उसको हम कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, मीनिंग सेल्फ सेटिस्फाई विदाउट अवेयरनेस ऑफ डेंजर। Synonym is smug, self-satisfied, content. Antonym is anxious, concerned, dissatisfied. Example: the team become compliment after every success, at early success. Heinous, heinous means घृणित, और जिससे आपके मतलब देख के गुस्सा है या फिर घृणा उत्पन्न हो मन में, उसको हम हेंसियस बोलते हैं। मीनिंग एक्सट्रीमली वीक और शॉकिंग। द क्रिमिनल वाज जेल्ड फॉर हिज हैनियस क्राइम, मतलब एग्जाम्पल है क्रिमिनल को जेल भेजा गया, क्यों कि उसने एक घृणात्मक क्राइम किया। सिनोनिम इज एट्रोसियस, एविल, monstrous. Antonym is noble, admirable, and virtuous. Third is inefficiency, means lack of ability to do something properly. देखिए efficiency का मतलब होता है कि आप किसी काम करने में अच्छे हो, मतलब आप अच्छा काम कर सकते हो। inefficiency मतलब होता है आप काम करने में अच्छे नहीं हो, तो आपकी क्षमता नहीं है, तो अक्षमता, निष्क्रियता। एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू द sheer inefficiency। सिनोनिम है इनकॉम्पिटेंस, यूजलेसनेस, अनस्किलफुलनेस। एंटोनिम है एफिशिएंसी, स्किल और कॉम्पिटेंस। मायोपिक मीनिंग लैकिंग फोर साइड, शॉर्ट साइड। आपने सुना होगा चश्मे का जब बोलते हैं मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, प्रेस बायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि आपको मतलब दूर की चीज़ें जो है आपको अच्छे से नहीं दिखाई देती है, उसको मायोपिया बोलते हैं। देयर मायोपिक पॉलिसी इग्नोर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सिनोनिम है नैरो माइंडेड, शॉर्ट साइटेड, लिमिटेड। एंटोनियम है ब्रॉड माइंडेड, फार साइटनेस, ओपन माइंडेड। फिफ्थ है हमारे पास कोपैसेटिक, मतलब मीन्स संतोषजनक और ठीक ठाक, मतलब जिससे आप सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ से। मीनिंग इज कम्प्लीटली completely satisfactory for or fine। एग्जाम्पल है एवरीथिंग वाज कोप एक्टिव एट द सेरेमनी। सिनोनिम में है फाइन, सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल। एंटोनिम है अनसेटिस्फैक्ट्री, पुअर, बैड। सिक्स्थ है सैंगुनरी, मीन्स रक्त रंजित और खूनी, मतलब जिसमें
जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो ब्लड का, और ब्लड जैसे मान लीजिए आप किसी का क्राइम करते हैं, खून निकलता है, तो उसको हम सैंगुइनरी बोल सकते हैं, जहाँ पे ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो। एग्जाम्पल है द बैटल टर्न इनटू द सैंगुइनरी मैसरेस। ठीक है। सिनोनिम है ब्लडी, गोरी, वायलेट। वायलेट एंटोनिम है ब्लडलेस, पीसफुल, नॉन वायलेंट, मतलब खून खराबा करना इसका मतलब होता है। क्रिप्टिक मीन्स रहस्यमय हो, और मीनिंग है हैविंग अ हिडन और मिस्टीरियस एग्जाम मीनिंग। द क्रिप्टिक रिमार्क कंफ्यूज द ऑडियंस। अगर आपने कुछ अपने कोड लैंग्वेज कुछ लिखते हैं, तो आप समझ सकते, बाकी लोग नहीं समझ सकते, तो उसको क्रिप्टिक बोलते हैं। जैसे आपका हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, जो लिखा है आज तक किसी को समझ नहीं आया, तो उसको हम क्रिप्टिक बोल सकते हैं। सिनोनिम है मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर, इनाइडमेटिक। एंटोनिम है क्लियर, ऑब्वियस, लूसिड। मेलेड्रोइट मीन्स अनाड़ी, असावधान, मीनिंग क्लस्पी और लैकिंग स्किल। एग्जाम्पल हिज मेलोड्रोइट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन वॉज मैटर। सिनोनिम है क्लम्सी, अवेकड, इनेप्ट। एंटोनिम है स्किलफुल, अडेप्ट, डेक्सटेरस। नाइन्थ है डिस्टेन मीन्स तिरस्कार या घृणा करना, किसी से दूर रहना, मीनिंग द फीलिंग दैट समथिंग इज अनवर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल ही लुक्ड एट द बेगर विद द डिस्टेन। डिस्टेन मतलब दूर रहना, मतलब एक तरह से दूरी बनाना, घृणा करना। सिनोनिम है कंटेम्प्ट, स्कोर्स, डेरिसन। एंटोनिम है रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, ऑनर। टेंथ वर्ड हमारे पास पेलुसिड। पेलुसिड मीन्स पारदर्शी या स्पष्ट, मतलब जो बिल्कुल आप आर पार देख सकते हो, सही हो, मतलब क्लियर हो बिल्कुल। एग्जाम्पल है द रिवर पेलुसिड वाटर रिवील द स्टोन बीनेथ। यानी जो पानी के अंदर जो पत्थर है वो आपको साफ साफ देख रहे हो, तो वो ठीक है। सिनोनिम है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड। एंटोनिम है ओपेक, क्लाउडी, हैजी। अब आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या आता है। अगला है इकोनोग्राफी मीन्स विजुअल इमेज सिंबल्स ऑफ कल्चर। एग्जाम्पल है क्रिश्चियन इकोनोग्राफी इज अ रिच इन सिंबलाइज। सेकेंड है एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर साइंटिस्ट। एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी एग्जामिन ह्यूमन एवेल्यूशन। यानी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन का जो है वो स्टडी करता है, मतलब ह्यूमन कैसे धरती पे उत्पन्न हुए, कैसे उन्होंने ग्रोथ किया, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। पैलियोथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फोसल, यानी जो फोसल जमीन के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम पैलियोथोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल है पैलियोथोलॉजी रिवील एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अगला है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं, मीन्स। एग्जाम्पल है हिज पैशन फॉर ऑर्निथोलॉजी लेड द बर्ड वॉचिंग ट्रिप्स। अगला है फ्रेजल वर्ब गिव। गिव मीन्स देना होता है, ठीक है। गिव फोर्थ, प्रोसीड, द बेल गेव द फोर्थ एंड लाउड साउंड। अगला है गिव इन टू, yield अंडर द प्रेशर। एग्जाम्पल ही गेव इन द टेम्पटेशन। गिव ऑन सेल्फ अप, सरेंडर, मतलब किसी को सामने आप मतलब हार मान के और हाथ हथियार रख देते हैं, तो उसको हम सरेंडर करना बोलते हैं, गिव ऑन सेल्फ अप। एग्जाम्पल द अनीफ गेव, द thief thief gave himself up to police। अगला है give on to, open toward। एग्जाम्पल द विंडो gives on to the courtyard। अगला आता है हमारे पास वोकैबुलरी में इडियम, ठीक है। इडियम देखते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब अब अब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होगा, यानी तो इसका मतलब हिंदी ये होता है, मतलब आपने कुछ कारनामा किया, उस पर आप पछता रहे हो, तो ठीक नहीं होगा ना, तो उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मीनिंग है टू बी अपसेट ओवर द समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। अगला है डाउन इन द डम्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब निराश या फिर सैड हो जाए, उसको हम बोलते हैं डाउन इन द डम्स, फीलिंग सैड और डिप्रेस। अगला है क्राई, क्राई ओवर आइस आउट। टू क्राई अ लॉट ऑफन अनकंट्रोलेबली, मतलब आप ऐसे मतलब दुखी हो कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
और आप ठीक नहीं हो सकते. So I hope you will enjoy this video, and I have done all first vocabulary of the Hindu newspaper and some vocabulary like antonyms, one word substitution and so on. Thank you so much, and we will meet on another video.